In today's video, we are going to learn about plastids, and the subtopics that we are going to cover in this video is the introduction, explanation, the functions of plastid, and then there is a quiz for you guys. So plastid. Plastid are basically the membrane bounded organelle, mostly pigment containing bodies, pigment containing bodies that is present in the cell, and they are called as plastid. They are only present in plants, right? If you see here, this is what plastid looks like. This is the outer membrane, then here is the inner membrane. There are some other structure that we will study later in details, right? So this is what plastids are. These are the pigment containing bodies, membrane bounded, present only in plants. So there are certain type of plastids, if you can see here, right? There are certain type of plastid, but in our book we are going to study only three out of them. The first like chloroplast, then chromoplast, and then leucoplast. However, other type also are present like the amyloplast or the proplastid or the etioplast or the alloplast, right? Or the protenoplast, but we will only discuss these three. Chloroplast, this one, it is involved in photosynthesis and lipid synthesis. Chromoplast, this one that is involved in pigment synthesis and the storage. And leucoplast, this structure that is involved in the synthesis of fatty acids and some amino acids. So let's discuss the first type, क्लोरोप्लास्ट. सो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अगर हम कोई भी फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल को देखें तो उसके अंदर photosynthetic plant cell, there are membrane bounding structure containing a green pigment called as क्लोरोप्लास्ट. वो जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. जिसका क्या फंक्शन होता है? जिसका फंक्शन होता है हेल्प्स दिस लाइट एनर्जी फूड मैन्युफैक्चरिंग. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका ये रोल होता है कि वो उन्होंने लाइट एनर्जी लेनी है, उसको यूज़ करना है फूड की मैन्युफैक्चरेशन में. और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये अपनी साइज़ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं, अबाउट 4 to 6 म्यूमीटर इन डायामीटर. अगर आप ये देखें तो ये जो पिक्चर है, इट इज़ व्हाट a chloroplast look like. Outer membrane, then there is the inner membrane, then these are the thylacolloid, this is the intermembrane space. यहाँ पे स्ट्रोमा है, यहाँ पे ल्यूमेन है, ठीक है. So this is what a chloroplast usually looks like. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है क्लोरोप्लास्ट का, और ये हमारे पास वैसे ही क्लोरोप्लास्ट है. तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो दे अपीयर टू बी heterogeneous structures with small granules that are called as grana. These are the small granules that are called as grana that is embedded in the matrix, right? So as you can see in this picture, under electron microscope our chloroplast show three main components. मतलब ये अब अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें तीन इसके मेन कंपोनेंट है. एक तो इन्वेलप होगा, दिस वन,
the chloroplast envelope, second is the stroma, and third is the thylakoid. तो ये जो envelope होता है, the chloroplast envelope, it is formed by a double membrane. See, it is formed by a double membrane, while जो स्ट्रोमा होता है इसने देखें कि काफ़ी ज़्यादा जो वॉल्यूम है क्लोरोप्लास्ट का उसको कवर किया हुआ है. जो स्ट्रोमा है ये बेसिकली एक फ्लूइड होता है जो कि थाइलाक्लॉइड को सराउंड कर रहा होता है. अगर आप देखें तो ये थाइलाक्लॉइड है हेयर, और ये जो स्ट्रोमा है ये उसे कवर कर रहा है. ठीक है. इट कंटेन्स प्रोटीन, सम राइबोसोम एंड अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए. जो स्ट्रोमा है वो क्या क्या उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे, एंड स्मॉलर अमाउंट में डीएनए भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. इट इज़ दी इट इज़ इन दिस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे जो CO2 है वो मैन्युफैक्चर करती है शुगर को. अगर आप यहाँ पर देखें तो जो CO2 है ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है शुगर्स, और जो कुछ प्रोटीन है वो भी यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे होते हैं. इसी तरह जो थाइलाकोइड है ये फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं. Flattened vesicle which arrange themselves to form the grana and the intergrana, right? On average, there are 50 or more thylakoids piled, 50 or more piled, 50 or more are piled to form one granum, right? So each granum जो है ये कनेक्ट हो रहा होता है एक नॉन ग्रीन पार्ट से जिसको हम इंटरग्रानम भी कहते हैं. Right? So, chloroplasts are basically the self-replicating organelle. It is the self-replicating organelle. Now looks at some of the functions that are being performed by chloroplast that is only present in the plants. So, जो chloroplast होता है सबसे पहला इसका रोल फोटोसिंथेसिस में होता है. इसने वहाँ पे रोल परफॉर्म करना है. स्टोरेज ऑफ स्टार्चेस में रोल प्ले कर रहा होता है. देन स्टोरेज ऑफ लिपिड में रोल प्ले कर रहा होता है. फैटी एसिड सिंथेसिस में और फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में ये अपना रोल प्ले कर रहा होता है. सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय क्लोरोप्लास्ट. Now it's the quiz time. So chloroplast is absent in animals, plants, or both. It's absent in animals. So dash are the self-replicating organelle, as we have just learned that chloroplast is the self-replicating organelle. So this conclude our today's lesson. If you guys got any queries, ask them below and I'll get back to you as soon as possible. Thank you so much for watching.